हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैंने किया है ये नो मेकअप लुक विच इज़ सुपर नेचुरल, फ्रेश एंड लुक्स लाइक ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये है आज का नो मेकअप लुक। आप भी ये सुपर नेचुरल फ्रेश लुक कैसे यूज़ करते हैं यूजिंग 3 प्रोडक्ट्स ओनली। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही फ्रेश लगता है। आप इसे करेंगे तो लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप किया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये नो मेकअप लुक कैसे किया है। और मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, लिटरली 3 प्रोडक्ट्स से फुल फेस मेकअप कर सकते हैं आप। और ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया भी नहीं और ज़्यादा कुछ सच में नहीं करना है आपको। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास ज़रूर अवेलेबल होंगे। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट I'm gonna conceal my under eyes using this LA Gold Pro Concealer. So I have concealed my face, so you can just conceal it and leave it, but I'm gonna apply the foundation as well. So for no makeup look, you can just also conceal your pigmentation areas and then leave it like that. But you can, if you want, you can use a tinted foundation or a BB cream. After concealing my face, I'm gonna use this Color Bar Timeless Filling and Lifting Compact with my concealer. Foundation, Color Bar Timeless Filling and Lifting Foundation with the hyaluronic acid. But I have taken this much on my finger because I have to apply very less because it's a no makeup look. So yeah. Now I'll make my brows, and as it is no makeup look, so I'm going to use the lighter shade for my brows. So I'm using this pencil. It's a 2-in-1 pencil. One side it has a spoolie and another side it has this pencil. So first I'm going to comb my brows with this spoolie. Now I'm going to fill it in with the pencil.
मेकअप लुक था, इसलिए मैंने अपने ब्रोज बहुत लाइट फिल किए हैं। मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया और ज़्यादा अंडरलाइन नहीं किया है, बस बहुत सॉफ्टली हैंडेड जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट था वहाँ पे बहुत लाइटली फिल किया है। ऑल्सो बिकॉज इट्स नो मेकअप लुक, तो मैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहती। दिस नायका मॉल्टिन, दिस इज़ लिप एंड चिक टिंट, इट्स इन द शेड ब्लेयर 03। तो आप इसे दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं, एज अ लिप टिंट एंड चिक टिंट एज वेल। तो मैं इसे दोनों वे से यूज़ करूँगी। जस्ट टू गेट दैट नेचुरल लुक मैंने ब्लश नहीं यूज़ किया, इंस्टेड आई एम यूजिंग लिप एंड चिक टिंट। Now because I have pigmented lips, so for that I'll be using this nude pink liner from Kalbar, and this is in the shade Burnt Pink 015. तो लिप लाइनर यूज़ करने के बाद मैं अगेन नायका लिप एंड चिक टिंट अपने लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी। So my makeup is done. Now just to open her eyes a little bit, I'm going to curl my lashes with this eyelash curler. तो आप देख सकते हैं मुझे मस्कारा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आईलैश कर्ल करने के बाद मेरे लैशेस लिफ्ट हो गए हैं, मेरी आईज ओपन और वाइड लग रही है, इसलिए मुझे मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ माई लेजिट नो मेकअप लुक एंड इट्स ऑलमोस्ट माई गो टू नो मेकअप लुक। तो नो मेकअप लुक में बेसिकली आप अपने बेस को जितना भी नेचुरल रख सके, आप चाहें तो इस मेकअप में हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज आई वांटेड टू मेक इट सुपर नेचुरल एंड इट्स फॉर अ डे टाइम, तो मैं हाइलाइटर का यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसमें हाइलाइटर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो येस, दिस इज़ माई लेजिट गो टू नो मेकअप लुक। ऑल्सो ये एक ऐसा मेकअप है जो आप ऑफिस जाते वक्त भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जल्दी में जाना है आप तब भी कर सकते हैं, आप डे टाइम में भी कर सकते हैं, आप शॉपिंग जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं पे भी ये मेकअप कर सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल, सिंपल एंड फ्रेश है। ये आपको बहुत ही फ्रेश और नेचुरल लुक देता है। तो नो मेकअप लुक बेसिकली आप फ्रेश, ग्लोई और नेचुरल दिखाता है। तो या दिस इज़ माई मेकअप लुक विच इज़ सुपर फ्रेश, नेचुरल एंड नॉट मच प्रोडक्ट्स यूज्ड। सो या आप इसे 2 मिनट में कर सकते हैं। इट्स सिंपल, इट्स ईजी, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज़ किए मैंने। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यस, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। And thank you guys for watching. Meet you next time. Love you all. Bye.